Any other student who want to give the opinion? Today we have started this chapter agriculture. We want to define agriculture. So we will write down the definition. Agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing. So we have written the definition and let us now understand how agriculture is art, how agriculture is science. You can unmute and you can give your opinion how agriculture happens to be art as well as science. रोहित आंसर देते हैं art is because it is traditional and science because it requires different modern techniques. How many of you agree with Rohit? And if you want to share your personal opinion about this definition, you can tell. देखो हम वेट कर रहे हैं. Okay, imagine we are moving on an aeroplane and below the surface we see different colors. Suppose we are flying in an aeroplane and if we look downward in the earth's surface, we will see different crop fields and we will see forest, we will see the highway, we can see the roadside plantation, buildings, town, city. We will see the colorful earth in its natural setting. And if we move over agricultural field also, we will find different shades of green and yellow and various colors, various shades of green as well. All greens does not look the same. Lovely says that chapter 2 and 3, why I am not teaching. Chapter 2 and 3 is not in your syllabus. So after 1, we have to study chapter 4, which is agriculture. So Rohit says it is art because it requires skills to be done. So I'm telling just about the perspective if we have on the earth's surface, if we fly in an aeroplane, then we will see multiple colors on the earth's surface. It is beautiful painting. It is the art performed by God on the earth's surface. And it is manifested in the form of different crops, different flowers, different fruits at different times of the year. And people have also performed this activity like an art. It means it is independent activity. There is no binding as to which crop and where and when they are going to do this agriculture. They are absolutely free to practice this agriculture in their own independent manner. But in due course of time, we have understood that agriculture is much more scientific and there is a pattern to it, which is also scientific. It means that agricultural activities are carried out in a sequential manner, number 1 followed by number 2, number 3, number 4, number 5. So I am going to prepare a list of activities which is performed by the farmer and you have to just arrange them into 1, 2, 3, 4. Which will be first, second, third, fourth. So this activity I am going to start now. I will write some activities related to agriculture and you have to arrange them from their order number 1, 2, 3, 4, 5. So let us write the activities.
here I have written 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you must rearrange them, which one will be first or second or third activity. These are the activities which are jumbled up, which are mixed up. So you have to rearrange the activity. If you are able to rearrange these activities, it means you are thinking in a scientific manner. So which one will be first out of all these things? Rohit says sowing. Sowing. Okay. First, number 1, plowing. Okay, this is number 1 activity. We will plow the field. Number 2, Lovely says sowing. So this will be number 2. Sowing. Next. Okay, fine. Swastik, Lovely. Swastik says first plowing. Okay, we have given it number 1, plowing. Then sowing. Now next, which one? Harvesting. Harvesting or crop care? Yes, sir. Crop care. Lovely says number 3 will be crop care. And next, number 4. One, two, three, done. Harvesting. Number 4 is harvesting. Fine. Now you tell me number 5 and number 6. Packing. Number 5 is packing. And then number 6? Last distribution. Okay. So everywhere in the world, farmer carry out the manner in this way only. 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and then number 6. So you cannot change this order of the activity which is performed. So whether you are literate or illiterate farmer, irrespective of your education or qualification, and you are knowing or unknowing, you are performing it in a scientific manner. Now you put fertilizer, now you apply some high yielding variety seeds, you apply modern machines, you apply some other techniques of farming, wet farming, dry farming, or multiple cropping, or strip cropping, whatever it is, or crop rotation. Whatever the modern techniques and methods are known to us, but this order cannot be changed, and it is scientific practice, and people are independent all over the world. People all over the world are carrying out the same sequence of activities in their own choice, in their own preferences only. And what are their choice and preferences? That gives us the types of farming. So what we get out of this activity is farming type. Type of farming, this may be 15. We know about shifting agriculture. We know about primitive subsistence. We'll learn the features of all of them one by one, but here we will understand that people all over the world are performing agriculture in this manner or this manner, and I am going to write down the next. So these are some of the established types of farming which are identified by us, and people perform either of the activities. So some people move from one place to another and they carry out agriculture, and they clear a patch of land, they will slash it, they burn it, then they start agriculture, they stay there for 3 or 4 years, and then they move to a new plot
And in that manner, they return to their original plot after say 9 years, 10 years or 15 years. And this method of farming is known as shifting agriculture. The farmers shift from one place to another place at certain regular interval. And before reaching a new plot, they are marking the new area, then they slash the weed or forest or bushes, and then they burn it. तो मेरा भी एक क्वेश्चन है कि सपोज यू आर शिफ्टिंग कल्टीवेटर, तुम एक जगह से दूसरे जगह गए हो, सारे पेड़ पौधे झाड़ी को काट दिए हो, ठीक है, तुमने जो है बड़े बड़े सोड निकाले, तलवार क्या ब्लेड्स हो गए तुम्हारे पास, ग्रास कटिंग चॉपिंग जो भी टूल है, उससे तुमने जो है एक प्लॉट को, एक खेत को तैयार किया, साफ सुथरा किया। अब बताओ कच्चा वाला झाड़ी और टहनी अच्छा से जलेगा या सूखा वाला? सर ड्राई वाला। जो कच्चा वाला पेड़ पौधे के डाल तोड़ के रखोगे वो अच्छा से जलेगा या सूख जाने के बाद अच्छा से जलेगा? सूखा वाला। ड्राई वाला। सबका आंसर है ड्राई वाला। तो ये लोग जो है एक नए जमीन पे गए हैं, इन्होंने स्लैशिंग किया, पेड़ पौधा जो वीड है और अनवांटेड जो भी है उनको लोग स्लैश किए। तो सेम डे बर्न करेंगे या 3-4 दिन बाद? 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद जो है वो जाके उसको जला देंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे 3-4 दिन 5 दिन बाद, क्यों? सर सनलाइट से वो और ड्राई हो जाएगा। अच्छा, धूप में सूख के जो है सारे जो तोड़े गए डाल पत्ते या छांटे गए जितने झाड़ी उड़ी थे वो 4-5 दिन में सूख जाते हैं और उसके बाद वो जल्दी जल्दी आग जलता है। हाँ, in order to it gets dried up naturally and it burns easily, है ना? उसके बाद क्या जो राख होते हैं वो फर्टिलाइजर का काम करता है सॉइल में। कुछ राख में जो बर्न है वो ऐश में भी कुछ कुछ मैन्योर होते हैं और वो जब प्लाविंग करते हैं और वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं तो उनका जो यील्ड है, उनका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाते हैं। तो कितने लोग को अब समझ में है शिफ्टिंग फार्मर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है? यस नो कम से कम एक्नॉलेज कर सकते हो। अच्छा, कोमल का रिप्लाई है, रोहित का भी रिप्लाई है यस, ठीक है ना? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में फार्मर जमीन छोड़ के दूसरे जमीन में जाते हैं। क्या आज के डेट में फार्मर अपने जमीन छोड़ के दूसरे की जमीन में जाएगा, खेती करेगा तो वो अलाउड है? क्या शिफ्टिंग कल्टीवेटर आज बहुत कॉमन दिखता है? फर्स्ट रेस्पॉन्डर इज स्वस्तिक, ही सेज नो। और देखते हैं कौन कौन रेस्पॉन्ड कर रहा है। रोहित का भी आंसर नो है। लवली का भी। आज शिफ्टिंग कल्टीवेटर बहुत कम दिखते हैं, तो इसका मतलब अगर दिखते भी होंगे तो प्लेन एरियाज में और जहां एडमिनिस्ट्रेशन है, टाउन है, बड़े सिटी है, उसके कनेक्टेड एरिया में नहीं नजर आते हैं। एक रिमोट आइलैंड में, रिमोट हिल एंड फॉरेस्ट में, इंटीरियर लोकेशंस में जो है हमको शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मिल सकते हैं, लेकिन ये रेयर है और आने वाले कुछ 100-50 साल में ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी खत्म हो जाएंगे। So this type of farming is soon going to become an extinct practice. All right, so we are slowly converting ourselves into a permanent farmer or cultivator. और जैसे शिफ्टिंग है तो उसका ऑपोजिट फार्मिंग टाइप को सेडेंटरी बोलते हैं, जहां फार्मर अपने ही जमीन पर खेती करते हैं। और ये सारे जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, एक्सटेंसिव प्लांटेशन और भी कुछ फार्मिंग टाइप्स अगर होते होंगे तो वो सब जो है सेडेंटरी है। और एक अकेला जो फार्मिंग टाइप है वो है शिफ्टिंग है, जिसमें फार्मर्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मिंग टाइप जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। तो उनके कुछ फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे प्रिमिटिव वर्ड का मतलब होता है वेरी ओल्ड। Primitive also means very simple. Earliest of the cultivators or the earliest of the farmers did the agriculture in most simplest form known to them.
तो वो सिर्फ बीज छिड़क देते थे, रेनी सीजन में बारिश हुआ और वो पौधा खुद ब खुद बढ़ गया, उसमें फ्रूट्स फ्लावर्स ग्रेन्स हुए हैं और वो उनको हार्वेस्ट किए हैं। तो अर्लीस्ट ऑफ द अर्ली मैन जो है वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टेक्निक को फॉलो करते थे। एकदम सिंपल टूल, हो, दा, स्टिक, एक्स, हैंड एक्स, इस तरह से सिकल, wooden equipments or metal equipments were used, and in its very simple manner. They were dependent on animal labor, they were dependent on monsoonal rainfall or natural rainfall, and only food grains. They were growing only the food grains. Whatever they grow, that was sufficient to only fulfill their own requirement. They never thought of storing it or keeping it for business purpose, and they did not had anything like to earn profit. उनको प्रॉफिट करना नहीं था। जो भी अनाज उगा है वो अपने जरूरत के मुताबिक उगाते थे और उसी में वो संतुष्ट थे। So the primitive subsistence type is practiced by those farmers who are using simple tools, techniques, dependent upon monsoonal rainfall. They use some animal labor and manure, and mostly the food grains are grown. They do not grow any other commercial crops like wheat. Wheat is also a food grain, but not for business purpose, and therefore we can identify primitive subsistence cultivators. Now next technique is intensive subsistence agriculture of farming. This is number 3. 1 and 2 we have done. Number 3 is intensive subsistence. So we will learn the features of intensive subsistence farming. First point is that intensive means that the same plot is cultivated 2 times, 3 times, or even 4 times in a year. So intensive farming is done in those areas where the population is much high, availability of land is much less, and the farmers have to produce high quantity, large quantity of food grains. And the population being so high, the entire harvest, entire production is consumed locally. तो अभी एक करके इंटेंसिव फार्मिंग के फिर से फीचर्स रिपीट करेंगे। इसमें इंटेंसिव वर्ड का मतलब है सेम फील्ड इज कल्टिवेटेड सेवरल टाइम्स, मे बी 2 times, 3 times, 4 times in a year. Why? कोई बता सकते हो ऐसा क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है कि कम है? Intensive farming, the farmers cultivate the same field several times in a year, and it is practiced in densely populated areas. जहां population density ज्यादा है वहां प्रैक्टिस होते हैं। क्या मजबूरी है किसानों की? पॉपुलेशन ज्यादा है और खेत वाले जमीन कम है। ऐसी स्थिति में किसानों को जो है एक ही जमीन पर 3-4 बार खेती करके फूड प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। फिर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ क्या? हाई पॉपुलेशन है और जमीन कम है, खेत वाले जमीन कम हो गए हैं, 3 बार खेती किए, 4 बार खेती किए तो भी सारा अनाज लोकल मार्केट में बिक गया। सारा अनाज से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि हमारे देश का ही आबादी ज्यादा है, तो अपने देश के ही लोग खा रहे हैं, सब्सिडाइज रेट में खा रहे हैं, सरकार खरीद लेती है तो राशन में बांट दे रही है। नतीजा क्या है? केवल देश का गुजारा होता है। Our whole country is only able to fulfill its self requirement, and the farmers of a particular locality are also able to fulfill only the domestic requirement of an area. So इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में पहला बार खेती हुआ, दूसरा बार, तीसरा बार खेती हुआ, तो फर्स्ट टाइम बारिश हो गए, सेकेंड टाइम कैसे खेती करेंगे? क्या हम आर्टिफिशियली इरिगेट कर सकते हैं? सेकेंड और थर्ड टाइम में क्या हम खुद से इरिगेशन करके खेती करें? हाँ, रोहित मैनमेड टेक्निक, स्वास्तिक से यस। तो क्या और कुछ है? सेकेंड टाइम मान लो इरिगेट किए, थर्ड टाइम क्या हम फर्टिलाइजर डालेंगे?
हाँ, मॉडर्न टेक्निक्स, सेकेंड, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम we will apply more and more available techniques. तो प्रिमिटिव से ये इंटेंसिव, इसमें ये डिफरेंस है कि प्रिमिटिव में सिंपल टूल टेक्निक है, नेचुरली जो है वो मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन इंटेंसिव सबसिस्टेंस में वो सारे मॉडर्न मेथड अप्लाई करते हैं जो एक्सटेंसिव और प्लांटेशन में भी होते हैं। लेकिन ये सबसिस्टेंस है, यानी देश बड़ी मुश्किल से अपना अनाज को जो है जुटाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और लोकली सारा कुछ कंज्यूम्ड हो जाता है। इतना मेहनत किए, मॉडर्न फर्टिलाइजर यूज किए, हाई यील्डिंग सीड यूज किए, इरिगेशन यूज किए, सब कुछ के बावजूद भी केवल देश के लोगों का पेट भरता है, सस्टेनेंस लेवल तक ही हम पहुंच पाते हैं। So this is the features of primitive and intensive. अब intensive जो है, intensive subsistence में भी कॉमर्शियल मेथड यूज हो रहे हैं, और वो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह वेरी करता है। एक एग्जांपल बुक में भी मेंशन्ड है, द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वन एग्जांपल दैट इज प्रोवाइडेड इन योर NCERT book is that the rice is grown as a commercial crop in Punjab, Haryana, and the same rice is grown as a subsistence crop in Odisha and Andhra Pradesh and West Bengal and Bihar. जो चावल होते हैं, पैडी के जो क्रॉप्स है, वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के किसान जो है वो पूरे देश को अनाज सप्लाई के लिए करते हैं। सस्टेनेंस को फुलफिल करने के व्यू पॉइंट से फार्मिंग होता है। लेकिन पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो बासमती चावल ग्रो करते हैं और वो 5 स्टार होटल को भेजते हैं, और बासमती चावल जो है वो पैक होके फॉरेन चला जाता है। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रसिया हम लोग से अच्छे बेस्ट क्वालिटी के चावल खरीद लेते हैं, और जो पहाड़ी इलाके में दून चावल भी बोलते हैं, लंबा लंबा लॉन्ग ग्रेन राइस है, जिसके हमारे कंट्री में भी जो है वो कुछ पैक्ड राइस मिलते हैं बासमती, तो पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश एंड द फुटहिल्स में जो ग्रो किया जाता है वो हम लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। That rice, which is a subsistence crop in Odisha, Andhra Pradesh, is a commercial crop in Punjab, Haryana. पंजाब हरियाणा के किसान 100 किलो अगर चावल उगाते हैं तो उसको 1 किलो का दाम 100 रुपए रखते हैं, और वो 5 स्टार होटल को भेजते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले क्या करते हैं, सिंपल उसना चावल, बासमती चावल या अरवा चावल उगाते हैं, और उनका कीमत जो है वो 20 रुपए किलो रखते हैं या 25 रुपए किलो रखते हैं, और इससे हजारों लाखों लोगों का पेट भर जाता है, और इसी वजह से इनका कीमत को कम रखा गया है, 20, 25, 30 रुपीज, 40 रुपीज किलो। लेकिन वही पैक्ड राइस बासमती है जो होटल खरीदते हैं और जो एक्सपोर्ट होता है वो 120, 130, 140 रुपीज पर किलो भी हो सकता है। Almost 3 to 4 times jump in the prices there. So we have learned about 3 farming types: shifting agriculture, primitive subsistence, and intensive subsistence agriculture. अब next one is extensive. अब ये वर्ड का मीनिंग जानेंगे। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़े आकार का जमीन। The size of the agricultural field are very very big. Like they may measure up to 1000 hectare in an area. 1000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर का जमीन हो सकता है। चलो अब इमेजिन करो तुम्हारे पास 1000 हेक्टेयर का जमीन है। अब तुम क्या हल और बैल से अगर प्लॉविंग करोगे तो तुम्हारा काम खत्म होगा टाइमली? अगर तुम्हारे 1000 हेक्टेयर का जमीन है, काफी बड़ा जमीन है, क्या तुम हल और बैल लगा के उसमें प्लॉविंग करोगे तो तुम्हारा काम क्या 10 दिन में प्लॉविंग हो जाएगा पूरे जमीन का? यस या नो, ये रिप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ा जमीन है, हजारों हेक्टेयर में तुम्हारा जमीन है, और तुमको वहां पे
प्लोइंग करना है तो क्या पुराने तौर तरीके से हल बैल पुराने टेक्निक से क्या होगा? मैन और ह्यूमन लेबर से काम कंप्लीट होगा? रोहित का आंसर आया है कि मॉडर्न टेक्निक शुड बी यूज। क्या ट्रैक्टर यूज करेंगे? कोमल बोलती है काम समय पे नहीं खत्म होगा। अब मेरा ऑप्शन है क्या हमें ट्रैक्टर और मशीन लाने होंगे हजारों हेक्टेयर का प्लोइंग Yes, करने sir. के लिए? हाँ, तो यहाँ पे मेकनाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है। जहाँ जमीन काफी बड़े हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में जमीन बहुत बड़ा है। ये सब कंट्री जो है वर्ल्ड के 3rd 4th लार्जेस्ट में से है ना। सबसे बड़ा कंट्री वर्ल्ड का रशिया है, फिर मान लो कनाडा है ना, फिर यूएसए, चाइना आता है। तो इतने बड़े बड़े देश में पॉपुलेशन कम है, चाइना को छोड़ दे तो अदर देन चाइना ऑल द बिग कंट्रीज है वेरी लेस पॉपुलेशन। Sorry, it got disconnected, and so I am just asking you once again. So in those countries where the population is less and availability of land is much big, in those areas what happens? The work is to be carried out through machine. So if we bring tractor, then we need harvester, we need a combine, then we need packaging, and all equipments are machine controlled. So farm mechanization is an important feature of extensive agriculture. Extensive agriculture में सारा काम मशीन से होता है। क्या पैसे कम लगते हैं कि ज्यादा लगते हैं? You need to spend more money or less money on your tractor, on your petrol, on your fertilizer, on your other equipment? High use of money. So Rohit says that we need more money, we need more machine, we need modern methods. तो यहाँ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन कम है और बड़े एरिया में जो भी हम साइंटिफिक मेथड से फार्मिंग किए हैं तो यील्ड पर हेक्टेयर भी हाई होगा। हमको जो अनाज उग रहे हैं वो भी ज्यादा क्वांटिटी में मिलने वाले हैं और खाने वाले लोग कम है। तो अब क्या करेंगे? जहां पॉपुलेशन कम है, खाने वाले कम है और अनाज ज्यादा उग रहा है और मशीन से काम हो रहा है, अब ये सारा अनाज फेंक देंगे कि इसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे? अनम्यूट करके बोल सकते हो। रोहित का रिप्लाई है एक्सपोर्ट। और कोई बच्चे जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? पॉपुलेशन कम है, मॉडर्न मेथड से फार्मिंग हुआ है, जमीन बेहिसाब बड़े जमीन है, सारा हार्वेस्ट जो है वो हम लोग जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? सर ज्यादा होगा। तो यहाँ के किसान अमीर होंगे कि गरीब होंगे? सर अमीर होंगे। Good. The farmers are rich. They apply modern techniques and methods. The yield per hectare is high. They export the food grains to foreign countries, and then they reinvest the profit. And in that way, the agriculture is much advanced in those countries. और इसी का एक्सटेंसिव का एक कजन भी है, वो है प्लांटेशन। थोड़ा सा इससे थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाता है। प्लांटेशन में एक ही पौधे को जो है लगाया जाता है। अगर दूर दूर तक अगर मान लो कि टी है, टी एस्टेट है, कॉफी प्लांटेशन है, रबर के क्रॉप है, कोकोनट हो सकता है। सो कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन इन प्लांटेशंस एंड दैट इज ए सिंगल वैरायटी ऑफ क्रॉप और बुश और ट्री फार्मिंग इज डन। तो जहां रबर है तो रबर के ही जंगल मिलेंगे। अगर कहीं कोकोनट प्लांटेशन है तो सिंगल क्रॉप है, कहीं शुगर केन है तो शुगर केन ही दूर दूर तक मिलेंगे। और उसमें स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है। एक आदमी को एक ही काम दिया जाता है। किसी को अगर मान लो चाय का पत्ता तोड़ने आता है तो उसको एक ही काम दिया जाएगा कि भाई तुम केवल बागान में जाके टी लीफ को कलेक्ट करो। किसी को जो है टी लीफ का रोस्टिंग करना, टी प्रोसेसिंग करना और टी पैकिंग का काम आता है, तो काम बांट दिया जाता है।
ऐसे ही रबर प्लांटेशन में भी रबर का केयर करना होता है। रबर का पौधे में जो है किस टेक्निक से रबर कलेक्ट करते हैं, फिर उसको वल्कनाइज करते हैं, फिर उसकी स्टोरिंग, पैकिंग एंड अदर प्रोसेसिंग। द पर्सन इन्वॉल्व इन सच फार्म्स नो देयर जॉब and they get specialized, they get skilled, and then we get better output from the same person. तो ये हो गया पूरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग का रफ आइडिया, एंड इट्स ऑलमोस्ट 38 minutes showing in my computer. So I give you 1 or 2 minute break if you have any problem related to the definition, how it is art, how it is science, and what are the activities related with farming, how we rearrange the farming into scientific order, what are the types of farming. This all we have done today. So I'm just waiting 1 or 2 minutes. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, you get 1 minute vacation, 1 or 2 minute vacation. Please let me know whether you have to ask any questions related to things which are already mentioned here in your board. Subsistence means production done for self requirement. आत्मनिर्वाह के लिए जो खेती होता है वो सबसिस्टेंस है। अगर कोई किसान अपने परिवार का ही जरूरत को पूरा करता है तो वो हो गया सबसिस्टेंस। अगर किसान के पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, और वो मार्केट तक जाके एक्सपोर्ट कर सकता है तो वो हो गया प्रॉफिट मोटिव, और वो हो गया कमर्शियल। ओके, अभी क्लास एंड कर देते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।